number of people took to the streets of Gilgit, the capital of illegally occupied Gilgit-Baltistan, to demonstrate against both the local and Pakistani government, accusing them of facilitating rampant land grabbing by mafias in the region. They accused Islamabad of providing a no objection certificate to the land mafias who have grabbed several acres of land in the region. Calls of those leading the protests have resonated with the large section of the region, and the demonstrations are now gathering steam. Demonstrators urge the people present in the protest to come together for the common goal of cornering government on the issue until they reclaim what is rightfully theirs. जब हुकूक की बात आती है तो हमें लड़ाया जाता है, कहते हैं ये कशरोट है, वो हम भरी वो मजरी माला है। भाई हमारे हुकूक इज्तिमाई है, हमारे हुकूक इज्तिमाई है, हमने इज्तिमाइयत के लिए कोशिश करनी है। मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा, आप मुझ पे एहसान नहीं कर रहे, आप अपने नस्लों के लिए कर रहे हैं, मैं भी अपने नस्लों के लिए कर रहा हूं। तो आइए इसमें जात पात तंजीम मजहब फिक्र का क्या वास्ता है। Land grabbing in Gilgit-Baltistan is not a new issue. It has been a cause of concern and plight to locals for several decades. As per the accounts of locals, the mafias have only grown stronger thanks to the unflinching government support. Symbolic illegal dispossession acts have been brought into force by different governments, but they simply haven't had teeth enough to control grabbing. In fact, observers say that the laws have deliberately been prepared weak so that the mafias can get away despite grave crimes. हमारे आबाओ अजदाद पिछले 50 साल से इस अपने हुकूक ज़मीन और पानी के इन हुकूक को हासिल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की उनकी ज़िंदगियां चली गई, लेकिन यहाँ की जालिम इंतज़ामिया और हुकूमत ने माफिया साथ मिल के हमारे हुकूक पर डाका डाला और आज तक हम एक सरसाही ज़मीन अपने इन लोगों को हासिल नहीं कर सके। और आज यही ये सूरत हाल है कि आइंदा के लिए जितने बच्चे हमारे पैदा होंगे उनको डोमिसाइल के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं है, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये खालिसा सरकार है। बाहर से माफिया वाले अगर कब्जा करते हैं तो उनके लिए छुट्टी है, और जब हमारा कोई बंदा उधर जाता है तो दफा 144 लगाकर उसको अंदर करते हैं। The people of illegally occupied Gilgit-Baltistan have never been treated at par with the people of Pakistan. Islamabad has kept them marginalized and has discriminated against them ever since the region was illegally annexed post British India partition. They are denied state benefits. They do not enjoy fundamental rights which the government claims to have accorded them. Atrocities are meted out and their life continues to reel under an illegal occupier which has only grown brutal with time. And next we move on to Jammu and Kashmir that recently launched a District Good Governance Index in the backdrop of strong governance performance at national level. By taking this initiative, it has become the first one in the country to have such an index. Virtually released by Union Home Minister Amit Shah, the index is expected to provide a robust framework for evidence-based assessment of the performance of all the districts in the Union Territory. We have a report. Jammu and Kashmir saw an increase of 3.7% in good governance indicators from 2019 to 2021 in the National Good Governance Index that was released by the Centre on December 25 last year. Strong performances were witnessed in commerce and industry, agriculture and allied sectors, judiciary, public infrastructure and utilities and public safety sectors. This further encouraged the administration to identify the impact of various governance interventions at district level, leading to the launch of District Good Governance Index for all the 20 districts of Jammu and Kashmir. DGGI is a framework document comprising of performance under 10 governance sectors having 58 indicators with 116 data points. It was recently released virtually by the Union Home Minister Amit Shah in the presence of Union Minister Jitendra Singh and J&K's Lieutenant Governor Manoj Sinha at Convention Centre, Jammu. Calling it a beneficial move towards improving the district machinery, Shah said this will further be expanded to other states.
दिन केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज एक नई शुरुआत जो जम्मू कश्मीर ने की है, वो शुरुआत धीरे धीरे देश के हर राज्य में जाएगी और बाद में देश के हर जिले के बीच में एक तंदुरुस्त सुशासन की स्पर्धा शुरू होगी। आज ये सुशासन इंडेक्स जो शुरू होगा, जिलों के बीच में जो स्पर्धा होगी, इससे जिले के तंत्र को सुधारने के लिए, उसको लोकाभिमुख कराने के लिए, उसको परिणाम लक्ष्य बनाने के लिए और उसको डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को होना है। केंद्र सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, ये सभी का जिला स्तर पर मॉनिटरिंग इंडेक्स के अंदर समाहित किया गया है। The District Good Governance Index was prepared by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances in partnership with J&K administration. Major improvements were witnessed in various sectors as per the results of the index. While the agriculture and allied sector showed a universal coverage achieved in Kisan Credit Card Scheme, Soil Health Card Scheme and animal vaccination. The commerce and industry sector showed improvement in GST registration, MSME units registered online, credit to handicraft and credit for self-employment. In social welfare and development sector, 80% Aadhaar seeding of ration cards represented a major milestone. And in public health sector, full immunization represented a significant success story. Moreover, the percentage of public health centers or sub-centers converted into health and wellness centers and the proportion of Anganwadis with their own buildings also showed improvement. Lieutenant Governor Manoj Sinha said, District Good Governance Index will help all districts of the Union Territory to follow the best practices. और अच्छी शुरुआत हुई है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस विभिन्न जिलों में हैं, उनसे एक दूसरे जिले सीखेंगे और सुशासन पूरे जम्मू कश्मीर के हर जिले में स्थापित हो सके और लोगों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सके, इसमें सुविधा होगी, सहूलियत होगी। In the composite ranking of this first District Good Governance Index, Jammu managed to top the list, followed by districts of Doda, Samba, Pulwama and Srinagar. Under individual categories, Kishtwar topped in agriculture sector, Jammu in two sectors of commerce and industry and citizen-centric governance, Doda in judicial and public safety, Pulwama in human resource development, Srinagar in public infrastructure and Ganderbal in financial inclusion. While expressing his happiness, Deputy Commissioner of Jammu congratulated all the officials who worked hard to get the top rank. मैं समझता हूं कि जो हमारे सभी डिपार्टमेंट्स की एक कोशिश रहती है होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर आगे चलने की, तो उसी का एक रिजल्ट हमें मैं समझता हूं मिला है इस फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के तहत, जिसके अंदर कॉम्पोजिट रैंकिंग्स में जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जैसा आपने बताया, यूटी के 20 जिलों में सबसे ऊपर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक शुरुआत है और हमें और एक अच्छा फ्रेमवर्क जिससे मिला है, हम और आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं और खास करके जो 10 थीम्स हैं उनमें से जो थीम्स पर जम्मू थोड़ा पीछे रहा है उसके अंदर हम कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम्स में इस रैंकिंग को बरकरार तो रखा ही जाए, लेकिन ओवरऑल जो आउटकम बेस्ड अप्रोच है उसको और आगे लेके जाए। By providing a futuristic roadmap for improving district level governance with targeted interventions, District Good Governance Index of Jammu and Kashmir represents a significant milestone
in realizing the vision of Prime Minister for next generation administrative reforms. Being home to prominent religious sites ranging from temples to mosques to gurudwaras, Jammu and Kashmir is having a distinctive blend of cultural heritage. To unleash this potential of heritage tourism in the territory, various steps are being taken. The recent one was the musical event that was organized by the Indian Army at the historical Martan Sun Temple in Anantnag. The Kashmir Valley got engulfed by the melodious tunes of musical instruments as it hosted a special musical program at the historical Martan Sun Temple. Organized by 108 Territorial Army in collaboration with a group of social activists, the event was a part of their musical drive that has been started to promote heritage tourism in the valley. Besides, this drive is also providing an opportunity to the local youth to showcase its talent. हमारे साउथ कश्मीर में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जो यंग टैलेंटेड म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स हैं वो यहाँ पे साउथ कश्मीर में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और इसमें जो कोलैबोरेशन विद आर्मी है वो हमारा सपोर्ट कर रही है विद अ टीम एज अ टीम हम काम कर रहे हैं इस पे पूरी मैनेजमेंट के साथ तो जो सिंगर्स आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे कि आगे उनका जो मुस्तकबिल है वो अच्छा रहे जो ये कदम उठाया गया है ये इंडियन आर्मी की तरफ से हुआ है तो इसमें क्या है कि हर किसी टैलेंटेड सिंगर्स को मौका मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने का इससे कि जो कश्मीर के वादी के सिंगर्स है उनको उभरने का मौका मिल रहा है अभी यहाँ पे आज आए हैं यहाँ पे हम मार्टन सन टेम्पल में तो अभी के टाइम में यहाँ पे आज प्रोग्राम हुआ इससे क्या होगा कि हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग तो अभी के टाइम में जो हमारा ग्रुप था वो हमारे ग्रुप के जो उस्ताद है आरिफ अल्ताफ साहब मैं उनके साथ हूँ पियानो प्लेयर हूँ तो उनके साथ यहाँ पे आज हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत सारी जगहों पे हमने इससे पहले भी प्रोग्राम किया मुगल गार्डन में प्रोग्राम किया उधर खुंदरू में प्रोग्राम किया अभी आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बहुत सारी जगहों पे भी प्रोग्राम होंगे Considered as a magnificent architectural creation, Martan Sun Temple is situated in Ranbipora village of Anantnag district and is believed to be the only sun temple in the entire North India. It was built by Lalitaditya Muktapida, a third Maharaja of Kashmir under Karkota dynasty in 8th century CE and was destroyed by Sikandar Shah Miri of the Shah Miri dynasty in 15th century. Today it is a site of national importance in Jammu and Kashmir as declared by the Archaeological Survey of India and also appears in the list of centrally protected monuments. As J&K administration is keen to promote heritage tourism, it has started organizing several activities to attract tourists to such heritage sites, and the Indian Army is contributing its bit to the cause. At the latest event held at the Sun Temple, tourists highly praised the arrangements done by the army. मुझे पहले लगा कि शायद कोई शूटिंग चल रही है हमें एंट्री नहीं मिलेगी बट व्हेन वी चेक्ड आर्मी जस्ट अलाउड अस एंड दे सेड कि दिस इज द national event for 2 days and they will be allowing people but in the limited amount and they're taking good care. हम थोड़ी देर के लिए अंदर थे तो there was also one person who was taking care कि nothing happens, we don't fall down because वहाँ पे बड़ी बड़ी stones थे but it was nice. उन्होंने हमसे इतने अच्छे से वहाँ पे हमें एंटरटेन किया और वहाँ पे दे जस्ट रिक्वेस्टेड अस टू जॉइन एक्चुअली तो वी फील द पार्ट ऑफ द क्राउड. हमें अभी टूरिस्ट फील नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा. The UT administration has also started special city tours to revive heritage tourism and attract culture and heritage lovers from across the world to Jammu and Kashmir. It will take tourists to several places of great heritage importance
archaeological sites, shrines, mosques, temples, besides giving them insights into cuisines and handicrafts. Women in Jammu and Kashmir are on the path of financial independence, all thanks to the government schemes that not just aims to make women self-reliant by investing in their livelihoods, but also to unleash their potential and empower them. Using them, a few women self-help groups in Jammu have joined together to establish a farmer-producer organization engaged in dairy activities. Have a look. In the recent years, several women entrepreneurs have emerged in Jammu and Kashmir. While many are busy carrying forward their family's business, others have set up their own enterprises and are generating more employment avenues. And this is not just the case in the urban region of Jammu and Kashmir. In rural region too, women have shown an appetite for entrepreneurship. With the help of government schemes, they have turned over a new leaf and are just slaying in business. An example of it can be witnessed in Gajansu village of Jammu, where a group of women belonging to around 12 self-help groups are successfully running a FPO or Farmer Producer Organization engaged in dairy activities. FPO is a legal entity formed by primary producers like farmers, milk producers, fishermen, weavers, rural artisans or craftsmen. Ranging from milk to various milk products like cottage cheese, kalari, which is famous local cheese produced in Jammu, milk cake and curd, they supply a number of items across the region. Today, this FPO is not just enabling women in the area to receive a good price for their milk, but is also contributing towards preventing spoilage of milk. हम 10 लेडीज थी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी थी और उसके साथ हमारा एक बीओ बना इधर उधर कम से कम 12 सेल्फ हेल्प ग्रुप थे 100-150 लेडी जुड़ी हुई थी तो इधर सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों ने हमें ट्रेनिंग कराई मिल्क प्रोडक्ट की आईसीआईसी फाउंडेशन की मदद से तो फिर उन्होंने हमें मार्केट में जोड़ा फिर उसके हमने सभी ग्रुप को जो सेल्फ हेल्प छोटे-छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उनकी एक एफपीओ तैयार कर दी और उस एफपीओ में हमारे पास अब 200-250 मेंबर है फिर हमने इधर एक कलेक्शन सेंटर बनाया और यहाँ पे अब हम सभी लेडीज हैं जो इधर दूध देने आती हैं हमें तो उनका एक तो किराया बच गया जो शहर जाते थे दूसरा कई बार दूध खराब भी हो जाता था गर्मियों में लेकिन अब वो जल्दी इधर सब दूध दे जाती हैं तो उनको पैसा भी मिलता है दूसरा हम इधर क्वालिटी का दूध लेते हैं शहर से पैसा भी ज़्यादा देते हैं किराया भी बचता है उन लोगों का टाइम भी बचता है To run their FPO, these women have availed a number of subsidies under the various schemes of Animal and Sheep Husbandry Department. Using them, they have purchased a milk ATM van and various other machines like milk quality monitor and a cheese maker. Like these women from Gajansu village, there are many more from other areas of the territory who are coming forward and opening such FPOs. The department is also fully supporting them by providing them all the machinery on 50% subsidy. ये एफपीओ में काफी जो है खासकर बॉर्डर बेल्ट के लोग जो हैं जिसमें खासकर हमारी महिलाएं माएँ बहनें जो हैं वो ज्यादा जुड़ रही हैं जैसे हमने मड साइड में इसी तरह से एक आधा यूनिट जो है वो इस वक्त ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है काम कर रहा है वो वहां पे ऐसे ही हमें अर्निया सेक्टर्स में ऐसे ही हमारा यहाँ पे आरएसपुरा के बॉर्डर लाइन सेक्टर्स में भी कुछ एफपीओ जो है काम करने जा रही हैं एक ये त्रेवा में है अर्निया बिडर बॉर्डर लाइन पे है तो इसी तरह से बहुत सारे एरियाज में ये लेडीज जो हैं अब आगे आ रही हैं तो उसमें क्या काम किया जाता है कि
दूध जो है मिल्क कलेक्शन सेंटर्स कहीं पे भी वो एक पॉइंट्स पे भी बना सकते हैं, या फिर उसके अलावा भी कई कलेक्शन सेंटर्स पे रखे जा सकते हैं। और फिर उन कलेक्शन सेंटर्स पे एक ही पॉइंट पे उनको डिफरेंट सारे सब्सिडी बेस्ड हमारी सारी चीजें उनको मिल सकती हैं। जैसे खोया मेकिंग मशीन्स वो रख सकते हैं, मिल्क के लिए आपको उसको कलाड़ी बनाने के लिए उसको मशीन्स चाहिए तो वो हम उनको मैसर करते हैं, सारों में 50% सब्सिडीज पे। As women are said to be the building blocks of the society, their empowerment at the grassroots will not just create a positive impact, but also give boost to rural economy. And today in our section of Incredible India, we'll take you to get soaked in the celebrations of the famous Spituk Gustor festival in Ladakh. Observed with great zeal and enthusiasm at Spituk Monastery, the festival is a wonderful representation of rich Ladakhi culture. The traditional ceremonies, great hospitality, dance and music marks the celebration of vibrant Spituk Gustor, a two-day monastic festival organized in the Spituk Monastery of Ladakh. Held in the 11th month of Tibetan calendar, the festival is celebrated since 11th century and symbolizes the victory of good over evil. On the first day of the occasion, Thanka of Gawa Yapsar Sam is opened for the devotees. Mask dance, also known as cham, which is performed by the monks dressed up in traditional attire with mask on their face, forms the highlight of the festival. Accompanied by the melodious tunes of long horns, cymbals, conch shells and bells and other instruments, the dance is more like a drama with characters that represent the guardian divinities, Dharampalas and patron divinities of Gelugpa order. Thousands of local residents as well as tourists gather at the monastery to experience the charm of this annual winter celebration. स्पितुक गुस्टोर का जो पूजा है साल भर में एक ही बार होता है और ये हमारे टिबेटन कैलेंडर के हिसाब से 11वीं महीना जो आज हमारा 11वीं महीना चल रहा है और 11वीं महीना के 22वां दिन से हमारा पूजा स्टार्ट होता है ये यहाँ पर स्पितुक मोनास्ट्री में और जो 28 और 29 दिन का जो हमारे 11वें महीना का वहाँ उस दिन मार्क्स डांस होता है और मार्क्स डांस हर एक तरीके का मार्क्स डांस होता है और यहाँ पर जो माताजी काली माता श्रीदेवी जी उनका जो एक मुंह ढका हुआ होता है वो साल में 7 बार ही खुलते हैं तो इस बार अभी खुला हुआ है. Nestled atop of a hillock overlooking the Indus River, the Spituk Monastery was founded as a Red Hat institution and was taken over by the Yellow Hat sect in the 15th century. Every year, the monastery plays host to an annual event in which monks from various monasteries of the world like Sok, Sankar, Sabu and Spituk congregate. It serves as a perfect occasion to cheer up the visitors during harsh winters and have a great experience of pure country life away from the hustle and bustle of the city. कल जो हमारा एक लास्ट दिन जो एक पूरा जितने भी मार्क्स डांस होने के बाद जो हमारा एक स्टोरमा है जो हम उनको क्या बोलते हैं बटर केक जो हम बना के और जो भी इविल है पाप है जो भी एक पुराने जो साल में जो कुछ भी हमने जो भी मतलब दुनिया की एक शांति के लिए जो एक पूजा किया हुआ है वो 2 दिन का जो पूजा होता है वो कल समाप्त होगा जी.
Gustor in the local language means sacrifice of the 29th day and is a traditional ritual to the monasteries of the reformist Gelugpa order of Tibetan Buddhism. Symbolizing the destruction of all forms of evil, Spitu Gustor festival is also a time for people to renew old relationships and forge new bonds. That's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.